Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today's topic is inverse variation. What is the inverse variation? When one quantity increases, other quantity decreases. Means these are different. If one is increasing, the other is decreasing. While when one quantity decreases, अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस. तो इस केस में क्लास उल्टा होगा. जब भी आपके डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, या तो दोनों क्वांटिटी साथ में इंक्रीज कर रही थी या साथ में डिक्रीज कर रही थी, तो उनका जो वेरिएशन था वो डायरेक्ट वेरिएशन था. बट इनवर्स वेरिएशन के केस में एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. मीन्स अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी और अगर पहली इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ ऑपोजिट रहेगा. सो व्हेन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिखें, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन इफ प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट. क्लास देखिए, x जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली के लिए ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन है. जब आप 1/y लिखते हैं तो ये इनवर्स वेरिएशन को शो करता है. तो यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई वो हमेशा आपका क्या रहेगा, फिक्स क्वांटिटी रहेगी. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन इफ प्रोडक्ट एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर जो के है आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में उन टू क्वांटिटीज की प्रोडक्ट होती है. डायरेक्ट वेरिएशन में हमने x अपॉन वाई किया था तो वो वहां पे फिक्स था. हर बार आप जब उनको डिवाइड कर रहे थे तो आपको एक फिक्स नंबर मिल रहा था. लेकिन डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के केस में जब आप टू क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिक्स नंबर मिलेगा. यानी कि अगर x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2. राइट क्लास? नाउ लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स. सी क्लास, now class, suppose you have to paint a wall. So men and days. Now suppose one man will paint the wall in 3 days. Now class, tell me how many men you require if you want that your work will be done only in 1 day. आपको एक ही दिन में काम जो है वो कंप्लीट चाहिए. अगर आपने केवल आपको पेंटिंग करानी है, आपको कोई वॉल है जो पेंट करनी है और आपने एक जो है एक आपने एक लेबर ली, आपने एक मैन को बोला पेंट करने के लिए और टोटल उसको 3 डेज लगे. क्लास अब आपको लग रहा है कि मेरा एक ही दिन में पेंट हो जाए, तो क्लास आप क्या करेंगे? यू नीड मोर मैन. भाई एक तो कर नहीं पाएगा, वन पीपल कैन नॉट डू इट. सो देखिए क्लास, आपने मैन और डेज, आपने मैन का नंबर इंक्रीज किया तो जो आपका डेज है वो क्या हो गए क्लास? डिक्रीज हो रहे हैं. मैन इंक्रीज तो डेज जो है डिक्रीज हो गए. यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है 1 3 जा 3, 3 1 जा 3. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल क्लास. सपोज अगर 3 मैन जो है वॉल को कंप्लीट करेंगे 4 डेज में, राइट? तो अगर आपको वॉल को कंप्लीट करना है सिर्फ 3 डेज में, सो हाउ मेनी मैन यू नीड? 4. They will complete in the same time. Or if you want to complete the wall only in 2 days, then how many men you require? You require 6 men, so that your wall will be completed only in 2 days. Now if you want to complete only in 1 day, then how many you require? You require 12 men to paint the wall. And if you have only one man and then he is doing the painting, he will take 12 days to paint the wall. So here you can see if the number is increasing, the days are decreasing, and as I decrease the men, the number of days increases. Means if one quantity is increasing, other is decreasing. So this is the one example of inverse variation. Let us take one more example, which is speed and time. Suppose class, you have to travel the distance of 300 kilometer
and your speed is 60 kilometer per hour. Then how much time you will take to complete the distance of 300 kilometer? You will take 5 hours. But suppose you increase the speed to 100 kilometer per hour. Now how much time you will take? You will take only 3 hours to reach the same destination. And if you suppose decrease the speed to 50 kilometer per hour, then what happens, class? Now how much time you will take to reach the destination? It will take 6 hours to complete the journey. Now see, if we are increasing the speed, what is happening? The time decreases, right? If we increase the speed, time decreases. आपकी स्पीड आपने 60 से 100 की तो टाइम आपका 5 से 3 हो गया. तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन है. सेम व्हेन यू डिक्रीज द स्पीड, यहाँ आपने जैसे ही स्पीड को डिक्रीज किया और ये जो स्पीड है वो इंक्रीज, मीन्स जो आपका वेरिएशन है वो रिवर्स हो रहा है. अगर ऐसे में इंक्रीज हो रहा था तो इधर ये ऐसे में इंक्रीज है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज है, मीन्स डिक्रीज है. राइट क्लास? आई होप you understood this very well. Now let us do the exercise 7.2, question number first. Now your first question in the exercise 7.2 is, if 10 pupils can build a wall in 30 days, how long will 15 pupils take to build the same wall? The first question is same as I told you. Explain the example. So here the question is between men and days. The variation is inverse variation. See class, in these questions, first of all, when you read the question, you will try to understand ये जो question है आपका वो direct variation का है या inverse variation का, right? Then you will proceed your question. Now here the question is of inverse variation. After that जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको आप x assume करेंगे. तो let 15 men takes x days to complete the wall. Men and days का variation है. तो what is given? 10 pupil will take 30 days. Now class, what we have assumed, 15 men will take x days. And class, keep in mind, because the variation is inverse, you will put the two arrows like this. Class, in the direct variation, this is the same, means हमें इसको चेंज नहीं करना होता है, तो हम अपनी जो कैलकुलेशंस है वो डायरेक्टली यहाँ पर ही परफॉर्म करते हैं. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में हमें इस क्वेश्चन को दोबारा से नोट करना होगा. हाउ वी विल राइट इट लाइक दिस. नाउ you will note down this number, same 10/15, but you will note down this number in the reverse order, means you will not write 30/x, but what you will write? You will write x/30. Now the question is simple. You will do the cross multiply and you will find out the value of x. So here 15 multiplied by x is equals to 10 into 30. So x equals to 10 into 30 by 15. So this is 1, this is 2, and this becomes 20 days. It means they will take 20 days to complete the wall, means 15 men will take 20 days to complete the wall. Now class, here is a very simple method of checking your answer. What you will do, multiply 10 and 30. आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है उसके डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए. तो 10 30s is 300. Now multiply the number and the value of x. 15 20s is also 300. It means you have done
Correct. Right, class? So this is very simple method of checking your question. In the last, write the statement 15 men takes 20 days to complete the wall. Now look at the question number 2. Question number 2 is, a hostel with 100 students had enough food to last for 20 days. 20 students left the hostel. For how long the food will last? Now class C, जो हॉस्टल में बच्चे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हॉस्टल में जो फूड है वो इनफ है. 100 स्टूडेंट्स अगर आपके हॉस्टल में है तो जो उनके पास फूड का स्टॉक है वो कितने दिन तक चलेगा क्लास? 20 डेज तक चलेगा. नाउ दे आर आस्किंग इफ 20 स्टूडेंट्स लेफ्ट द होटल. हॉस्टल मीन्स अगर सपोज 20 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल को लीव कर दिया, छोड़ दिया, अब तो आपके स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे? 100 माइनस 20 मीन्स 80 स्टूडेंट्स रह जाएंगे हॉस्टल में. तो जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा? अब क्लास आप ये बताइए, अगर फूड जो है फिक्स्ड अमाउंट में है और जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं उस फूड को, उनका नंबर कम हो गया, तो वो फूड ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? आप इसको क्लास इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास सपोज क्लास 3 टॉफीज हैं और आप एक ही दिन में तीनों टॉफीज खा लेते हैं, रस, तो आपकी जो टॉफी है वो सिर्फ एक ही दिन चलेगी. और आप अगर एक टॉफी सिर्फ एक ही दिन खा रहे हैं तो वो कितने दिन तक चलेगी? 3 दिन तक चलेगी. राइट? तो इस तरीके से क्लास, अगर आपका जो फूड है वो लिमिटेड फूड है, राइट, और खाने वाले जो लोग हैं वो जो है आपके पास, सॉरी क्लास, जैसे टॉफीज के एग्जाम्पल में, जैसे अगर आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं आपके और आप 3 फ्रेंड्स उस टॉफी को कंज्यूम करते हैं, आपके पास केवल कितनी टॉफीज है? 3 टॉफीज, और 3 फ्रेंड्स हैं, आपने साथ में उस टॉफीज को खा लिया, तो आपकी वो टॉफी कितने दिन चलेगी? केवल एक ही दिन चली, सबने एक एक टॉफी खा ली. लेकिन आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है और आप अलोन हैं और आप वो 3 टॉफीज एक ही दिन में एक ही टॉफी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो टॉफीज कितने दिन तक कंटिन्यू होंगी? क्लास 3 डेज तक चलेंगी आपकी वो 3 टॉफीज. मीन्स अगर आपके नंबर ऑफ जो पीपल है उसको कंज्यूम करने वाले वो कम हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. राइट क्लास? तो इस तरीके से आप ये देखिए, जब आपके जो स्टूडेंट्स जब हॉस्टल में से कम हो जाएंगे तो उतना ही खाने का जो स्टॉक है वो ज्यादा दिन तक चलेगा. यस? सो व्हाट वी विल राइट हियर, we will write the variation is the inverse variation, and we assume let the food last for x days if 20 students left the hostel. So class here this is students, जो relation है वो किस किस के बीच में है? students और दूसरा days. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है आपको? 100 students will consume the food for 20 days. Now, how many students are left? 20 students are left, and we have assumed the food will last for X days. Now, as the variation is inverse, so how we will write this? We will write it like this: 100. Now we will write the after subtracting, so 100 minus 20 comes 80, right? Now is equals to, और इसका opposite, so x by 20. Now you will do the cross multiplication, so this becomes 80 into x equals to 100 into 20, right? Now x equals to 100 into 20 by 80. 20 ones are 4s are 1s are 25. Means the food will last for 25 days. तो देखिए क्लास, 100 students are consuming the food. Food lasts for 20 days. And when only 80 students are last, that food will continue for 25 days. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गया
तो आपके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था आपका इनवर्स वेरिएशन का। आई होप क्लास यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्लास, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम in the exercise or in this concept, please tell me in the comment box of the class. I will try to solve it there. Thank you.